guys, I'm Mahi. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well and I really hope that you guys are safe. So today's video is going to be a little different. We're not going to talk about fashion today, but we're going to talk about video editing. Yes, a lot of you guys have been asking, some of you guys have been asking me कि मैं अपनी videos कैसे edit करती हूँ, like YouTube के लिए and Instagram के लिए. तो आज सब राज खुल जाएंगे. वैसे तो मैं बहुत बात कर चुकी हूँ इस बारे में पहले भी, but ठीक है, everything will be in one video, but I'm gonna make separate video for my Instagram videos, like, and I'm gonna upload that on my IGTV. But for the YouTube part, we're gonna talk it here only. So my neighbors are okay. So let me give you a little back story. पहले तो मैं पहले ना G7X Mark II जो मेरा पॉइंट शूट कैमरा है उस पे शूट करती थी, लाइक लॉकडाउन से पहले तक. एंड आई यूज टू एडिट on Premiere Pro and then I shifted to Wondershare Filmora, which is like super easy because it has a lot of presets of transitions. Filmora just has a lot of presets in it and it's just easier to edit on that. So yeah, then lockdown हो गया and मेरा कैमरा ख़राब हो गया and मैं उसको ठीक नहीं करा पाई. Then I started shooting on my phone, which is iPhone 11 Pro, which has amazing 4K quality. So मुझे quality का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा जितना, but obviously जो इसकी quality है कैमरा की. By the way, I'm again shooting on my G7X Mark II because अब वो repair हो चुका है. तो जब मैंने फ़ोन पे शूट करना स्टार्ट किया, सो आई स्टार्टेड एडिटिंग ऑन माई फ़ोन ओनली बिकॉज आईफोन से डेटा ट्रांसफ़र करना लैपटॉप में एंड देन फॉर्मेट का बहुत चक्कर पड़ता था. सो आई थॉट लेट्स जस्ट एडिट इट ऑन माई फ़ोन एंड देन अपलोड इट डायरेक्टली फ्रॉम माई फ़ोन. सो दैट्स व्हाट आई डिड एंड दैट्स व्हाट आई स्टिल डू. बस ये मेरा वीडियो ऑब्वियसली मेरे को लैपटॉप पे करना पड़ेगा बिकॉज हेलो आई एम शूटिंग इट ऑन अ कैमरा. एंड या that is my back story कि कैसे मैंने phone पे editing करना start किया. Now without further ado, let's go to the video. Now I'm gonna start screen recording and screen recording I'll play on this video also so that आप लोगों के लिए भी easy हो जाएगा. Now one app which I swear by, which is like my go-to for video editing and मतलब I love that app और उसको मैंने subscribe भी किया हुआ है क्योंकि उसका एक free version होता है और उसका एक paid version होता है. So I am subscribed to its paid version and the app's name is InShot and I know like I think 60 to 70% of content creators edit their videos, at least Instagram videos, on InShot because it's super easy. जो इसका user interface है it's super easy, like हर कोई learn कर सकता है. Like even if you're not into video editing now, you can definitely and very easily learn it. So yeah, I'm gonna tell you how I edit my YouTube videos on InShot. Now I'm gonna play the screen recording. I have taken like a very small like 1-minute video to edit so that you guys get an idea also and I just don't take a lot of time of yours. Okay, now I'm gonna select this file that I have. ये वीडियो वैसे मैं अपलोड कर चुकी हूँ. It was like styling my sharara. Now as you can see, this video is a bit tilted, so first of all I'm gonna go to its crop section and then skew and then I'm gonna straighten it a bit like this. I love this app so much because it has like a lot of features and a lot of features are especially in the paid version, but I think if you are a content creator it's not that much money कि आप अपना काम के लिए नहीं पे कर सकते हो. But yeah, if you're just starting, then it's better to go with the free version, like just for the learning thing. Now when I am satisfied, I'm not completely satisfied, मेरे को थोड़ा सा और straight करना पड़ेगा. Yep, it works for me now क्योंकि if you can see वो जो gate है मतलब door का वो parallel आ गया है. Now I'm happy with how the video is looking. So I have this raw footage and as you can see this part like till here it's useless. So I'm gonna go to this split option and just click it and delete the faltu wala part that you wanna delete. Now you have this me saying hi, telling you I'm gonna style my sharara. Now यहाँ तक मुझे चाहिए. उसके बाद I'm just gonna go and get my dupatta
एंड आई वॉन्ट द पार्ट लाइक यहाँ से, अगेन यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो जो भी आपको पार्ट नहीं चाहिए. इट्स सो ईजी टू स्प्लिट एंड डिलीट इन दिस, एंड लाइक इट्स जस्ट सुपर ईजी टू यूज दिस ऐप. नाउ आई एम टेलिंग, ऑल्सो आई एम रियली सॉरी अबाउट द नॉइस. बहुत ज़्यादा नेबर्स शो करता है, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है उनका. मे बी यहाँ पे सिर्फ मैं अकेले नहीं रहती हूँ, यही प्रॉब्लम है. खैर, तो मैंने दिखाया कि नहीं ऐसे दुपट्टा नहीं पहनना है, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स. नाउ आई वांट टू टेक इट फ्रॉम हियर कि आप लोगों को दुपट्टा ऐसे पहनना चाहिए. नाउ मैंने इशारा किया है यू नो नेकलेस का. नाउ आई एम गोना गेट माई नेकलेस, कॉज हेलो और कौन ला के देगा मुझे. सो आई वॉन्ट इट फ्रॉम हियर. So I have my necklace on, and then I'm just gonna pose a little bit. Then I wanna show, if I wanna show some clothes, then मैं वापस चली गई हूँ अंदर कुछ लेने. I think okay मैं कुछ लेके नहीं आई हूँ यार. Now I'm just gonna take it from here, and as you can see मैं यहाँ से दूर हूँ, and then मैंने थोड़ा close-up वाला shot लिया है, and then from the back, and I am done. So now जो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे मैं दूर हूँ, and then यहाँ पे मैं पास हूँ कैमरा के. इसके बीच में as you can see this little pencil वाला mark, so you will click on it and you will get like a lot of transitions to put behind to put between two clips. तो जो आपका बेसिक लिखा है ना वो आपको फ्री मिलता है. बाकी जो भी नीचे आपको दिख रहा है सुपर, ग्लिच, स्लाइस, लाइट, वो सब पेड वर्जन में है. एंड एज आई टोल्ड यू दैट आई एम सब्सक्राइब टू दिस, and I think you should subscribe to this. Like I'm not forcing it, but they have like amazing transitions. Like this one, I really like the light one. See if I have to like, you know, it's like bouquet effect, and it's like really cool. And but for this, I'm just gonna go with this glitch effect. Like you know, थोड़ा glitch हुआ, and then मैं पास आ गई उस तरह से. And then what you can do, like obviously we don't wanna end this video on like you know essay. Then I'm gonna add a blank file, and then again you can see this edit feature. Then I'm gonna add this basic में से जाके fade वाला जो है, अगर मुझे उसको स्लो करना है तो मैं उसको स्लो कर दूंगी ऐसे, यहाँ से सेकेंड्स बढ़ा के. अगर मुझे उसको एकदम से फेड करना है देन आई कैन ऑल्सो डिक्रीज द टाइम इट्स गोना टेक टू ट्रांजिशन. बट आई एम गोना लाइक इसको मैक्सिमम कैपेसिटी पे करते हैं क्योंकि वो स्लोली जाता है तो अच्छा लगता है. Okay, now we have our video. I know यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा transitions है जो मैं कर सकती हूँ add, but I just don't wanna add it here. I wanna keep it like this. Here I said no, don't wear दुपट्टा like this. यहाँ पे I wanna add a transition, so I'm gonna add super में से second वाला, like वो sorry first वाला कि वो अंदर की तरफ जा रहा है. So yeah, I'm happy with it. And then necklace आ गया है. Yeah, I'm happy with the video now. As you can see, it needs a bit of color correction. For color correction I don't use InShot. I'm gonna go to another app and show how I do it, but first I want to show you some more feature of this app. Of course it has filters also. Earlier I used to use this, you can this one like Cinema One. I used to use this, but it looks great on like travel videos. As you can see, it doesn't look that promising on this fashion video, so I'm just gonna go and remove it. And then obviously you can adjust, like if you wanna lightness बढ़ाना है आपको तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हम यहाँ पे 6 पे कर देते हैं. And then as I wanna apply to all my clips, I'll go and click here like double check पे and apply to all. Now as you can see, it's applied to all the clips. It's that easy. Then I love one more feature. ये अभी अभी आया है, इसमें पहले नहीं था. As ये दिख रहा है PIP, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे and then you can select one more clip and वो आपकी इस वाली क्लिप के ऊपर आ जाएगा, which is amazing. Like मेरे को सिर्फ इसकी कमी लगती थी InShot में, उसके लिए मुझे हमेशा लैपटॉप पे मतलब एडिट करना पड़ता था. बट जब से ये आया ना, I feel like wow InShot. So now as you can see, I have added a vertical clip so that you know outfit easily दिख जाएगा कि पूरा मैंने क्या पहना हुआ है. And just edit it a little.
जहाँ पे आपको ऐड करना है आप ऐड करो. सपोज मैंने सिर्फ इतना ही पार्ट लेना है, so I'm gonna click on it and then you see this edit option, right? Then I'm gonna go to borders and I'm gonna add a little border here. So you can obviously change the color of the border, you can also change the opacity, but we're gonna keep it full because that's how we want it here. I'll recommend you guys to watch this video in a laptop or like in a bigger screen, और अगर फ़ोन पे भी देख रहे हो तो full screen में, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है InShot का वो वर्टिकल है तो आपको क्लियरली दिख जाएगा. So yeah, this is about the PIP feature. Then it has a lot of stickers. If you want to add something, you must have seen this. I add this social features stickers like Instagram, like यहाँ से मैंने Instagram डाला, but I'm gonna move it to the front like here, like as the introduction. यहाँ पे मैंने Instagram डाला and then I can edit it, and मेरे को कुछ भी अगर कि आएगा कैसे, like कौन से animation से आएगा, it will come like this and out it will go like this. And then I wanna add text also इसके आगे, so I'm gonna add my Instagram handle. Again super easy and I know बहुत शोर है, and I'm gonna add the same animation text पे भी. So this is how it will look like. Now if I don't like the black and white thing, I can change the color from here. Label पे जाके, this is called label, जो text के पीछे एक बार आता है. So if I want like थोड़ा round corners वाला, I'll choose this. And then for the color, I think I'm gonna go with light pink. Yeah, I'm good with this. So yeah, this is how it looks like. I think it looks pretty good. Now we have our video ready. Now let's talk about music also. So यहाँ पे आप देख सकते हो म्यूजिक का फीचर है बड़े अच्छे से. आप यहाँ पे ट्रैक्स पे जाओगे, they have a lot of amazing tracks and most of these tracks are copyright free, most I'm saying. So don't trust कि सारी आपको free मिलेंगी, but जो InShot का classic होता है ना, like this one, this is copyright free. So let's take this one. Suppose I have taken this one. एंड अगर आपकी वीडियो में कोई भी वॉल्यूम है तो आप म्यूज़िक पे जाओ, अपने वीडियो पे टैप करो, उसको ज़ीरो कर दो अगर आपको वो नहीं चाहिए, एंड देन अप्लाई टू ऑल. पूरा वो म्यूट हो गया है, अब हमारा सिर्फ म्यूज़िक सुनाई देगा वीडियो के पीछे. नाउ आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद द वीडियो. नाउ आई कैन जस्ट एक्सपोर्ट इट फ्रॉम हियर, सेव रेजोल्यूशन 4K, बिकॉज हमने उसमें फिल्म किया था. फ्रेम रेट भी हम चेंज कर सकते हैं, but I'm okay with it. So we're gonna just save it and wait it to get exported. Then I'm gonna show you how I edit, like how I color correct. It's not even color correcting, it's just I apply filters and it does the job. Now as you can see, this video is saved, so I'm gonna go back and we're gonna go to other app that I use for color correction. I use Tezza app. Now I love Tezza app. If you don't know, Tezza is a brilliant photographer and she launched this app like a while back, but मेरे को तो थोड़ा टाइम पहले ही पता चला है, I think 6-7 महीने पहले. सो इसका भी मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है. इट्स लाइक 318 पर मंथ. अगेन आई थिंक मैं ईयरली इसलिए नहीं लेती हूँ, एक तो ऑब्वियसली एकदम से तुम्हें 3,500 रुपये देने पड़ेंगे तो इट्स अ बिग डील. सेकेंड ऑफ ऑल मंथली मैं से लेती हूँ. कभी कभी मेरा नहीं भी मन करता है यू नो ये वाला ऐप यूज़ करने का, तो आई थिंक मंथली इज़ द सेफेस्ट option. Okay, so now you have this. I have a lot of pictures here. I got this new dress and as you can see I went overboard. Okay, then you see this plus button, you'll go and we'll select the video that we just edited. Now we have the video here. Now as you can see it has a lot of filters. आप कुछ भी filter लगाओगे ना तो उसमें adjust ज़रूर कर लेना. Like मैंने lush लगाया. I like the lush because आप देख रहे हो तो इसने wall का color थोड़ा bright कर दिया है, which is really nice. And इसने जो हमारी dresses के color है वो बिल्कुल भी ज़्यादा हिलाया नहीं है, pink ही रखा है उसको. So I'm just gonna move it to 30, which will look
a bit better and like color correction अच्छा लग रहा है, bright लग रहा है, बहुत अच्छे से सारा pattern वगैरह दिख रहा है. Now we'll go to, you can always adjust like कितना contrast चाहिए. Now I think there should be some more contrast because pink थोड़ा सा fade लग रहा है, so I'm gonna increase the contrast a little. Then I'm gonna go, और कुछ तो मुझे color correct करना नहीं है, but again it has a lot of options. Then I'm gonna go to this fourth option. Now you see this vintage film, stop motion, frames, glitter. Now I'll show you vintage film. I love this feature. I just remove the blur from it क्योंकि ये वीडियो को थोड़ा blur कर देता है. As it says, it's vintage. Now you can see these lines, these black and white grainy lines. So that's I add it in my videos from the Tezza app because it's just amazing. So that's how you make your videos look a bit vintage. Now I'm satisfied कि video कैसा लग रहा है. I'm just gonna save it from here, and then you see this save option. I'm just gonna press this and it will say saving your goods, hold tight, and I'll have my video ready and I can I'm ready to upload it on YouTube. And this was it. This is how I edit my YouTube videos. That's how I've been editing my YouTube videos using InShot and Tezza app. I really hope that you guys enjoyed it, and I think this is like super easy and super easy to use. Both these apps are available on Android also. But I really hope all in all this video was helpful. Comment down below if you have used any of these apps and did you like this video. Yeah, I'll see you guys next time in my next video. Just please don't forget to subscribe, like and comment and share this video if you found this helpful. I'll see you guys next time in my next video. Bye. Also, if you like my hoodie, because I think ouch. Also, if you like my hoodie, because I think it's super cute, and look at the detailing here. And hello, we love Dexter, we love Cartoon Network, we are Cartoon Network. So it is from Myntra, and Myntra haul is coming soon, so stay tuned for that, and I'll see you guys next time in my next video. Bye bye.